It's basically वही म्यूजिक बिजनेस वाला सीन है. इफ वन थिंग सेल्स यू जस्ट रिपीट इट. वही सक्सेस को रिपीट करने के लिए यू आर जस्ट डूइंग सेम थिंग ऑल ओवर अगेन. तो एक गाना अगर कुछ 90s में कभी फेमस हुआ था, दे आर गोइंग टू रीमिक्स दैट ट्रैक अभी, और अभी के हिसाब से कि जो अभी के जनरेशन को पसंद आएगा या जो लोग अभी के लिसनर्स को पसंद आएगा. और तब ऐसा होता था कि मतलब म्यूजिक बनाया है तो वो लोगों तक पहुंच रहा है. दे वुड ईदर लाइक इट और दे वुड नॉट. अभी हम लोग को सर्व किया जाता है ऑन अ प्लेटर, लाइक कि ये ही म्यूजिक है, ये यूट्यूब से मतलब यूट्यूब एडवर्ड्स या मतलब हमारे तक पहुंचाया जाता है बेसिकली कि हमें वो चीज़ें सुननी है. तो आपकी ऑडियंस वैसे ही बन गई है कि उन तक जो म्यूजिक आ रहा है वो बस वही सुन के, दे आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लोर मतलब. What does music do for you? For me, it's the biggest stress buster. In fact, especially when I'm driving. Welcome back to the channel. I hope you're doing absolutely fine. Today I have with me Sahil. He's a bass player and a poet and has seen the evolution of music in India over the years and has grown with it. In fact, he's also played with many renowned artists across India and has played in many festivals, especially the YouTube Fan Fest. Hi Sahil, welcome to my channel. Hi Sneha, how are you? Very well. Okay, so on a lighter note, I want to ask you, how were you introduced to the world of music and who has been your inspiration? So I started learning bass in 2011. I'm still learning, but तब ये था कि I was in Lucknow. I'm from Lucknow. अभी तक मैंने नहीं mention किया था वो. So basically I'm from Lucknow and I came to Delhi in 2011. And लखनऊ में ऐसे लोकल बैंड्स होते थे तब जो ऐसे मॉल्स में प्ले कर रहे हैं, और तो उनको सुन के ही मतलब आई वाज इन स्कूल बैक देन. एंड तब से मतलब मैंने कुछ बैंड्स को सुना. अभी दे आर लाइक गुड, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइव्स, और मतलब अच्छे रेनाउंड आर्टिस्ट भी हो गए हैं उसमें से काफ़ी सारे. तो वहाँ से शुरू किया था. आई स्टार्टेड विद इंडी बैंड्स ओनली, और उसके बाद दिल्ली आके थोड़ा सा ऐसे वो हुआ कि यार शिट, दिस इज समथिंग एल्स. जो यहाँ पे हो रहा है और जो लखनऊ में हो रहा था, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब यहाँ पे लोग और बेटर तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी अलग म्यूज़िक बजा रहे थे, क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर सकते वहाँ के हिसाब से. जो आर्टिस्ट वहाँ पे प्ले कर रहे थे लोकल बैंड्स, दे वर डूइंग गुड. बट दिल्ली आके आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस while I was learning. So one of my co-bandmates back then, he introduced me to a lot of bands like Pink Floyd, जो मैं आज भी follow करता हूँ. मतलब I'm a huge Pink Floyd fan. And फिर then I got introduced to a little heavy side of the music, मतलब heavier side you can say, जहाँ पे bands like Lamb of God और you can say Dream Theater and all, जिससे मेरे को थोड़ा वो मिला कि हाँ ठीक है, ये भी होता है, ये भी हम सुन सकते हैं. And then अभी तो I'm back at playing Bollywood, but I love listening to progressive music. I love listening to old school rock. तो वो that is something where my heart is अभी भी. मतलब whenever I feel like listening to something, I go back to Pink Floyd. I go back to listening to Porcupine Tree and stuff like that. But I play Bollywood, I play everything. मतलब it's not I'm not you can say genre bias वाला scene नहीं है मेरा कि मुझे यही सुनना है, कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुन सकता. बट हाँ, इनिशियली ऐसा होता भी था, पता है कि when we started playing metal, तब बहुत ऐसा प्राइड वाला होता है. मतलब when we are in teenage या ऐसे कि हम metal play कर रहे हैं और ऐसा, it's like cool. बट उसके बाद you get out of that bubble कि भाई अगर if someone is playing Bollywood, so that takes equal effort. If they are playing an R&B track या कोई ट्रांस म्यूजिक कंपोज कर रहा है या प्रोड्यूसर है, so that's the same कि उसमें भी उतना ही एफर्ट लगता है. So yeah. Right, completely. Okay, so Abhi, there's a time when there was a lot of public festivals that used to happen. In fact, in public spaces, bands used to play and all. But everything has become so private now, and the demand for private gigs have increased. Okay, Yeah. what is Yeah. really happening out there? So tell me something about that. So yeah, private sessions like private gigs, you can इसमें हम दो तरीके से बात कर सकते हैं. प्राइवेट गिग्स तब भी होते थे. प्राइवेट गिग्स मतलब जो दोज आर नॉट a music festival which is not just for music. तो private space में मतलब it could be a wedding gig, it could be a personal corporate gig like companies के gigs होते हैं.
सो अभी जो चेंज है, इट्स बिकॉज ऑफ, आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड के बाद ऐसा बहुत सारा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग दोज प्लेसेस. अभी म्यूजिक फेस्टिवल्स आर नॉट अलाउड. तो जो प्राइवेट वाला स्पेस वाला जो सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे they don't want to have like a huge band in terms of like जहाँ पे members भी ज़्यादा हों, जिनका budget भी ज़्यादा हो. They just want a small outfit like a duo setup or a trio setup, playing their own music, yeah, playing covers, and it could be in a personal private space. उनके it could be a house party, it could be a space where they have like a gathering of 30 to 40 people. तो वही है कि प्राइवेट स्पेस वाला दोज गिग्स आर गुड, बट अगर म्यूजिक फेस्टिवल से हम कंपेयर करेंगे तो मतलब थोड़ा अलग सीन होता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट दे एक्सपेक्ट अस टू प्ले. बिकॉज म्यूजिक फेस्टिवल्स में you are playing your own music, you play the covers that you actually want to play, and people go there to listen to the artist. But here it's the other way around, कि यहाँ पे आर्टिस्ट को बुलाते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू प्ले सम म्यूजिक दैट दे वुड लाइक टू लिसन. मतलब उस ऑडियंस के हिसाब से द सेट लिस्ट गोज. सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट वी कैन सी इन अ म्यूजिक फेस्टिवल और अ प्राइवेट और अ कॉर्पोरेट गिग और अ प्राइवेट स्पेस वाला गिग जो है. Fair, fair. But do you think that, artists these days, I mean, honestly, even I feel this, but I want to ask you this, do you feel ki artists are undervalued, and then even event companies especially are mismanaging artists these like over the ये years? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएगा, बट वही है कि अंडर वैल्यू तो हाँ, कुछ कुछ जगह हो सकता है, बट नॉट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी होता है. इफ द इवेंट इज फाइन, मतलब अगर वेल मैनेज्ड इवेंट है तो फिर सबको मतलब दे गेट द ट्रीटमेंट दैट दे डिजर्व. बट अगर मिसमैनेजमेंट है इन द एंटायर इवेंट तो फिर चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक नॉर्मल केटर हो, या चाहे वो कोई भी हो लाइक साउंड इंजीनियर, तो सबका ट्रीटमेंट फिर उस मतलब हिल जाता है थोड़ा सा. और क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है. समटाइम्स वी गो फॉर से वी आर प्लेइंग एट अ प्राइवेट इवेंट, इट कुड बी अ वेडिंग गिग, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट. सो जिन्होंने हु इज द क्लाइंट, they are into music or they like listening to music, so they would treat you differently, because they know the value that the value for like of the musician की वो कितना how much energy और how much time that the musician puts in वो स्टेज या वो स्टेज पे जाने के लिए या वो एक्ट प्रिपेयर करने के लिए. Whereas अगर हम किसी ऐसे जगह पे प्ले कर रहे हैं जहाँ पे क्लाइंट ने आपको बस इसलिए they have just called you just for as entertainment purpose, so उनका treatment थोड़ा सा अलग होगा as compared to the person who is already, who already wants to listen to your music, or who would sit and listen instead of coming to you and telling you what to play and what not to play. So that's how things work. And management के हिसाब से event management companies, there are a lot of companies, so वो तो मतलब we can't just compare. मतलब कोई नया नया कंपनी होगा तो उनसे they do some things, मतलब कि जब शुरू करते हैं तो सबसे गलतियां टाइप होती है कि उनको पता नहीं है कैसे करना है, they are still figuring it out. तो और जो established कंपनी है, they won't ever do anything कि आर्टिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो या they face challenges that they shouldn't be facing मतलब उस इवेंट के टाइम पे. So yeah, that's how it goes. Fair, fair, fair enough. Chalo, now coming to the most unfortunate part of this whole scenario, the pandemic. So, ab Yeah. batao, how heartbreaking was it for you, especially because you've been playing with a lot of artists and you've been doing a Yeah. lot of gigs. So, how heartbreaking Yeah. was it for you? Yeah, it was heartbreaking at first because हमने किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था. I'm sure it's not just for the artist community or the event side of it, like सबके लिए ही है. तो we were trying to make something out of music. We were trying to earn our like daily bread out of it. But वही था कि अचानक से जैसे कोविड आया एंड थिंग्स गॉट चेंज बिकॉज सारे इवेंट्स बंद हो गए, सब कुछ. वी आर नॉट गेटिंग एनी शोज, वी डोंट हैव एनीथिंग बिकॉज
बिजनेसेस भी डाउन है, बट इवेंट इंडस्ट्री एंड द हॉस्पिटैलिटी द सबसे ज़्यादा इस पे फ़र्क पड़ा है. So I have seen people taking up jobs, including me. I was looking for a job जब COVID आया, because I have my own bills. I need to pay my rent. तो ये सारे म्यूजिशियन, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सबने ये फेस किया है. तो वही है कि अभी वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये कैसे खत्म होगा एंड हाउ थिंग्स कैन वर्क. थिंग्स आर अ लिटिल बेटर. अभी इवेंट्स हो रहे हैं, क्लब्स हैं जहाँ पे लोग इवेंट्स कराते हैं, और मतलब सिचुएशन थोड़ा बेटर हो रहा है, बट इट्स नॉट एज गुड, और इट्स नॉट इवन क्लोज टू हाउ इट वाज अर्लियर. बिकॉज लाइक आई मेंशन्ड अभी भी थोड़ी देर पहले कि पहले बैंड्स को बुलाते थे, लाइक बड़े बैंड्स होते थे, 5 पीस 6 पीस, एंड बड़े नाम वाले बैंड्स भी होते थे, लाइक अ ह्यूज नेम. तो अभी उन लोग के पास भी काम नहीं है, बिकॉज पीपल कांट अफोर्ड, क्योंकि सारे बिजनेसेस डाउन है. दे जस्ट वांट समवन टू एंटरटेन देम, टू एंटरटेन द क्राउड. तो वो दे वुड रादर गो फॉर अ न्यू आर्टिस्ट एंड फॉर अ स्मॉलर बजट आर्टिस्ट, जहाँ पे थोड़ा छोटा सेटअप हो, साउंड का रिक्वायरमेंट कम हो, 2-3 लोग हो जो कि अकूस्टिक सेट प्ले कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ इट हैज बिन. एंड कोविड के अभी चलते, मतलब वी आर नॉट इवन श्योर कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एंड हाउ व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक. मतलब अभी ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि कितना डिफरेंस हम अभी चेंज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट वो है कि अभी के हिसाब से जो थोड़ा सा बेटर हुआ है, एंड आई होप सो, वी एक्चुअली होप सो कि इन द कमिंग in the coming few months, like say next year, early next year, through situation, the things might get better. Yeah, I hope so too. Yeah. I'm looking forward to live performances as well. Yeah. Okay, coming to my last question. Now that value, like everything has gone virtual, has performances Yeah. also gone virtual? Yeah, definitely. So because like I mentioned कि लोगों को अपना पर्सनल स्पेस पे ज़्यादा लोग अभी, बिकॉज इट्स कोविड, तो बाहर से लोग आना इट्स लाइक अ बिग टास्क. और बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे इवेंट्स में ऐसा कर दिया था दैट एक कैप ऑफ पीपल, लाइक यू कैन ओनली हैव लाइक 25 पीपल एट अ गैदरिंग, 30 पीपल. तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने अभी ये कर दिया, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आर्टिस्ट, दे दे होस्ट अ वर्चुअल केक where you are playing on a Zoom call, where you are doing a show like virtually अपने studio पे at your own space, so that वो distance भी maintain रहे and still you are getting the kind of music that you want to. And plus उसमें a lot of expenses, a lot, बहुत कुछ cut down हो जाता है for and plus risk is always there. मतलब कि वो cut down हो जाता है. तो सबसे बड़ा जो था कोविड का, मतलब ये virtual gigs का reason वो यही था कि आप instead of calling them to your venue or wherever you're hosting that party, at least you can just be safe, अपनी जगह पे रहोगे, and they'll be playing from their own space or like from their studio जहाँ से भी वो play कर सकते हैं, and you can actually enjoy their music. तो बहुत सारे इवेंट्स अभी वर्चुअल, मतलब जितने भी बैंड वाले इवेंट्स कोविड टाइम से जितने भी हुए हैं, दे वर मोस्टली, लाइक आई वोंट से बहुत ज़्यादा, बट हाँ, अच्छा खासा परसेंटेज, लाइक 60-70% ऑफ द इवेंट्स वर वर्चुअल. Right, right. I'm sure it would have been a quite an experience for you as well to go virtual. Yeah, yeah, it has been. Matlab, I have played a few gigs like on a Zoom call with a couple of bands, but apart from that, I've hosted a lot of events. जिसमें we have called artists जो virtual gigs कर रहे हैं, like they are playing and we are working with the client, and so like we just make sure कि the gigs are going smoothly. Right, right. Thank you so much for this wonderful conversation. But before I let you go, and I know I'm taking a lot of time of yours, you have to give me a performance of a band that you've inspired from, or a poem that you are very close to and you've written it yourself. Sure, definitely. So this is something that I wrote for my own city, for Lucknow, and it's actually very close to my heart. It goes like सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, यहाँ लोग बड़े नायाब मिलते हैं. ये वो शहर है जिसकी हर गली में ख्वाब बिकते हैं, वहीं थोड़ी दूर चलने पे बेमिसाल कबाब मिलते हैं.
तहजीब और कला यहाँ की पहचान है, तहजीब और कला यहाँ की पहचान है, सबकी आंखों में यहाँ का होने की शान है। वजदान की खोज में, वजदान की खोज में हर ढलती शाम के साथ यहाँ अंधेरे भी साफ दिखते हैं। ये वही जगह है जनाब जिसकी हर गली में ख्वाब